ओवम फ्रीजिंग, दिस टर्म क्रॉसेस द माइंड ऑफ मेनी फीमेल्स जो माँ बनने के लिए ट्रीटमेंट ले रही है या जो फ्यूचर में माँ बनना चाहती है. So let's know more about ovum freezing in this video. So hello everyone, this is Dr. Rasika Pise Gulhane, infertility specialist, Inaya IVF and Medigrace Hospital, Nagpur. सो ओवम फ्रीजिंग या oocyte क्रायोप्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जो अलाउ करता है एक महिला को अपने एग्स प्रिजर्व करने के लिए, ताकि जब वो रेडी है प्रेगनेंसी के लिए तब वो उन एग्स का उपयोग कर सके. दिस मेथड गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वुमेन टू हैव देयर बायोलॉजिकल बेबी, माने खुद के जीन्स का बेबी, जब भी वो रेडी है माँ बनने के लिए. Why do women opt for ovum freezing? It gives women a chance to extend their reproductive lifespan. जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे ही हमारे ओवरी में जो एग्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी होती है वो भी अफेक्ट होती है. सो फ्रीजिंग एग्स एट अ यंगर एज increases the chances of pregnancy in future. Secondly, it offers a solution to women who are undergoing treatment for medical conditions that can impact their fertility, such as chemotherapy and radiotherapy. Also, it gives women a freedom to focus on their career, education and personal goals without the pressure of starting a family. So let's understand this with an example. That if a woman chooses to freeze her eggs at the age of 30 years and plans to get married or plans to start her family at the age of 40 years, so she can use her eggs that are frozen at the age of 30 years and there is a better chance at pregnancy and having a normal baby. And whereas a woman has not frozen her eggs and plans to have a baby at the age of 40, so her eggs quality and quantity is already deteriorated and there is less chance of her to get pregnant and have a normal baby. So now let's know the process of egg freezing. So first, there will be a consultation with your specialist and they'll tell you the risk, the benefit and they'll assess your suitability for the procedure. So first step रहती है ovarian stimulation, जिसमें हम ovaries को stimulate करने के लिए hormones के injections देते हैं. ये तकरीबन 10 से 12 दिन लगाए जाते हैं और इसको monitor करते हैं एक सोनोग्राफी के थ्रू. बाद में ये जो eggs हम बनाते हैं इन्हें एक प्रोसीजर के थ्रू पेशेंट को एनेस्थीसिया देके हम निकाल लेते हैं. इस प्रोसीजर को एग रिट्रीवल बोलते हैं या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड एस्पिरेशन. जो निकाले हुए एग्स रहते हैं उन्हें बाद में स्क्रीन किया जाता है और जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ एग्स रहते हैं उन्हें फ्रीज किया जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज विट्रिफिकेशन. Then the eggs are labeled and stored by the process called as cryopreservation for at least 20 years to come. Now another question that often crosses the mind is the egg quality affected? And I would mostly say no. The egg quality is not affected after thawing the eggs. In this career-driven era, where every woman does not want to compromise the initial days of their career due to pregnancy, so they can consider ovum freezing as an option. If you want to know more about ovum freezing or have any queries regarding ovum freezing, you can WhatsApp us or you can also follow us on social media. So I'm Dr. Rasika with Inaya IVF and I'll see you in my next video.